Hello friends, this is IQCIVILS IAS Academy, myself Narendra Sharma, and these are the panel of elite faculties, and these are the government projects by IQCIVILS IAS Academy in Guwahati. Okay, and these are the Google reviews through which you can understand that how this IQCIVILS IAS Academy is continuously breaking the records in IAS exam in terms of your results. Okay, as far as faculties are concerned, brilliant faculties are from Delhi, and you can see the panel of faculties in this slide, isn't it? They all are from Delhi. And for any inquiries regarding admissions, you can contact on these numbers. You can contact on the YouTube channel link as well. And the batches which are going to start in Guwahati, isn't it? That is the 5th December. So don't forget this date, 5th December and 15th December, if you want to crack IS exam in 2023. Okay, so don't forget these uh, dates because they can be these dates can be landmark in your life, isn't it? So don't miss this opportunity. Here we are going to understand like how the cyclones are forming, isn't it? See, if you see the results, our toppers are here, isn't it? As I have told you, if you want to grab the seat, just enrolled as soon as possible in IQ Civil Science Academy. Okay, so uh, let's understand the formation of the or the genesis of cyclone here. Genesis of tropical cyclone. Genesis of tropical cyclone. Okay. Uh, See, genesis of tropical cyclone, in which we can understand that cyclones are forming over the sea surface, where temperature, the ideal temperature must be around 27 degrees centigrade. Ideal temperature is 27 degrees centigrade, and this ideal temperature of 27 degrees centigrade reaches in peak summer. Peak summer means that is around July, August. Okay. So at this moment, what is happening? 27 degrees centigrade of temperature is developing over the surface of the tropical ocean, as it is the genesis of tropical cyclone. So this temperature is forming over tropical sea, and these such temperatures are found in at various places, isn't it? So various smaller depressions are simultaneously generating on the sea surface, and when they are collecting together, they can form a big depression or the stronger depression like this. Okay, and that's why cyclone needs a stronger low pressure. I'm erasing the other depressions because now they're collecting together at one place and a big depression has been formed. See, so this is low pressure area or the big depression area, which is forming within the tropics, that is 0 to 40-degree north and 40-degree south. Mind it, 0 to 40-degree north and 40-degree south. This is the location of tropical cyclone in the tropical sea. Why 40-degree north? Because northern hemisphere is comparatively more warmer than southern hemisphere due to uniform distribution of land and water. लैंड भी ज़्यादा है तो लैंड का टेम्परेचर भी क्या होता है, ओशन में ट्रांसफर होता है, इसलिए ट्रॉपिकल सी का टेम्परेचर इन नदर्न हेमिस्फीयर 40 डिग्री लैटिट्यूड तक गर्म मिलता है एंड इन साउथ इट इज ओनली अप टू 30 डिग्री. Okay, now tropical cyclones are forming only over the sea, not over the continent, because continental temperatures are fluctuating. Okay,
So fluctuating, it means daytime temperature is higher, nighttime temperature is very less. So because of fluctuation, cyclone won't generate. If it is starting its formation in daytime, it will die in nighttime, isn't it? Because of such a huge temperature difference. But temperature such fluctuating, I mean, very little difference has been seen over the sea. As you know, the characteristics of the ocean, they are maintaining the temperature, isn't it? Even in night, temperature is not going to be very less. And even in day, the temperature is not going to be very high, isn't it? So balanced temperature you can find over the tropical sea. That's what cyclones are generating over there, isn't it? Tropical cyclones are generating over there. Okay. क्योंकि कॉन्टिनेंट पे क्या होगा, दिन में ज्यादा रात में कम, तो फिर साइक्लोन तो खत्म हो जाएगा रात में। टेम्परेचर मेंटेन रहना ना, कितना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर दिन में 30 है तो रात में 27 होगा, तो फिर बात वही होगी, आइडियल 27 पे पहुंच ही जाएगा। सो दिस, if the ocean is maintaining this temperature for few days, then cyclone will form. So this is a low pressure area, and this low pressure area can be found till 60 to 70, till 60 to 70 meter in the ocean, mind it, 60 to 70 meter of depth in the ocean. Okay. And here what we can see, that convectional current starts rising from this point, because if it is low pressure area, obviously it will invite the winds from surrounding, and if they invite wind from surrounding, the wind is rising in this way or in the form of convectional current. These winds are rising in the form of convectional current. Highly heated winds are lighter, and as it is the peak of summer, so atmosphere is warmer. If atmosphere is warmer, wind is warmer, and wind is rising above because of lighter nature. Warm winds are what? Lighter. That's why they are rising higher in the atmosphere till tropospheric height. Tropospheric height means that is up to 14 kilometer. Okay. So at this area, I mean, in the upper tropospheric, in the upper part of troposphere, that is at the height of 10 to 14 kilometer, the winds which are collecting here, I mean at this point, the winds which are collecting from the surface, they are comparatively becomes what? They comparatively becomes colder, comparatively colder, isn't it? Because you know, in the higher atmosphere, temperature is lesser. If it is comparatively colder, then high pressure will develop. And here, what was developing at the surface because of high heat? Low pressure was developing here. So here it was low pressure. In the upper atmosphere, because of coldness, it is showing high pressure. High pressure का मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। टेम्परेचर कम रहता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और लो का मतलब जब वहां से गैसेस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठता है, सरफेस पर लो प्रेशर प्रिपेयर होता है। ठीक है। नाउ हाई से लो की तरफ डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है। नाउ सी इन द सराउंडिंग रीजन्स, फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स, this is basically the central part is known as I. Mind it. This is known as I. This is I, and these are the central. I mean, in the surrounding of I, convectional currents are rising in this way. Okay, they are rising in this way from the surrounding region of I, and this is known as I wall. The surrounding region of I is known as I wall. See, this is your I wall of the cyclone. So I wall is the most disastrous zone. Central part is I, but the surrounding of I is I wall. You can see here. In I wall, winds are consistently, rapidly, and intensely, with full intensity, with full speed. They are rising higher in the atmosphere. That's why they are also continuously forming cumulus and cumulonimbus clouds. Okay, so cumulus and cumulonimbus clouds, they are basically forming in the eye wall. And cumulus and cumulonimbus clouds are forming because of high heat, presence of very high heat or high temperature, as well as availability of moisture. Isn't it? High amount of moisture.
As you know, this is the genesis of tropical cyclone. So cumulonimbus clouds are forming because of high heat and high moisture. And as you can see here, that the currents, the convectional currents which are rising in the atmosphere, they are continuously moving upward and clouds are forming. See, for the formation of clouds, the requirement is that the warm moisture laden winds must rise higher in the atmosphere with very high velocity, with very high intensity. बहुत जल्दी फटाफट ऊपर उठना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, ऐसे cumulonimbus clouds form होते हैं. And these cumulonimbus clouds are precipitating. They are precipitating with thunder and lightning. Okay, so thunder and lightning के साथ इसका precipitation होता है. So this eye wall is very dangerous zone in terms of uh, one of the region of the cyclone. यहाँ पर बहुत तेज बारिश और बहुत ज़्यादा what you can say क्या होता है, uh, बारिश के साथ बादल फटने और घट मतलब आई मीन क्लाउड बस्ट की सिचुएशन भी आती है. यू कैन सी हियर, the clouds are cumulus and cumulonimbus, which are obviously highly dangerous in terms of precipitation, thunder and lightning. ठीक है, eye wall will show you the disastrous effect. And why eye wall is forming? Because the warm wind, I mean, see, this is the low pressure. This was the low pressure area. So in this low pressure area, when winds are attracting, they are not entering into eye. Why? Because there's a much temperature difference between eye and surrounding regions. That's why the winds which are coming from the surroundings are not entering into eye because of huge temperature contrast. And that's why eye क्या होता है, eye बिल्कुल खाली होता है. ठीक है, eye बिल्कुल ही खाली होता है. आई का क्या है, आई बिल्कुल खाली होता है एज देयर नो क्लाउड्स इन द आई. सो सन इज डायरेक्टली, सन क्या होता है यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है. Sun is visible in the upper part of eye, isn't it? Why? Because this is the cloud free zone. So what you should know that eye is eye is zone of, आई में क्या होता है, जोन ऑफ कामनेस, स्टेबिलिटी, नो वेदर फेनोमेना. ओके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता आई में, आई वाले एरिया में. सन इज ब्राइटनिंग the center of the cyclone. Okay, this is about आई. आई में कोई क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होता है. क्लाउड जब नहीं होगा तो कोई वेदर की भी फॉर्मेशन नहीं होगी. एंड माइंड इट, दिस एंटायर एरिया, दिस हाई प्रेशर इज बेसिकली क्रिएटिंग अ सक्शन मैकेनिज्म. यहाँ पर क्या होता है, अंदर की तरफ सक्शन मैकेनिज्म काम करता है हाई से बीच में, उस पूरे आई के सेंट्रल पार्ट में. तो ये वाला प्रेशर अंदर मेंटेन रहता है. दैट्स वाई फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स कन्वेक्शनल करंट्स आर राइजिंग वेरी हाई इंटेंसिटी. देखो साइड से तो उठ ही रहा है, क्योंकि बीच में ये दबाएगा जब यहाँ पर, तो किनारे से तो हवा उठेगी ना तेजी से. एंड द विंड मस्ट राइज हाइयर विथ वेरी हाई वेलोसिटी. बहुत तेजी से उठना जरूरी है. अगर तेजी से नहीं उठेगी तो क्या होगा, क्यूमुलस क्यूमुलोनिमस क्लाउड नहीं बनेंगे. और क्यूमुलस क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स क्या होता है, आफ्टर रिलीजिंग द प्रेसिपिटेशन दे आर आल्सो रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. Latent heat of condensation is also required for the maintenance of cyclone, and that is provided by the clouds which are forming in eye wall. So this is your eye wall, not eye. WALL, eye wall. Okay. So eye wall बोलते, eye wall क्या, बहुत खतरनाक एरिया. आई वॉल इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना क्लाउड्स बनता है, दे आर प्रेसिपिटेटिंग विद थंडर एंड लाइटनिंग. ओके, आफ्टर प्रेसिपिटेशन दे आर रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. And that latent heat of condensation is going to, again what, reheated the eye wall. इसको जितना ज़्यादा यहाँ पे हीट होगा उतना तेजी से गर्म हवा उठेगा और उतना तेजी से
क्लाउड्स बनेंगे उतना ज़्यादा तेजी से साइक्लोन मेंटेन रहेगा, क्योंकि क्लाउड्स बारिश करने के बाद लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फिर से सेंड करते हैं उसी जगह को। फिर से साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन को टेम्परेचर मिलता रहना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट सस्टेन। So main driver of the cyclone is LHC, mind it, latent heat of condensation, isn't it? Why? Because you can see that, I mean, immense clouds. I mean, what you can't expect the density of the clouds in eye wall. बहुत खतरनाक एरिया होता है, इतने clouds बनते हैं यहाँ पे, और वो मॉइस्चर रिलीज करने के बाद हीट भी रिलीज करते हैं, तो फिर से वो एरिया वार्म होता है, फिर से उठते हैं, इस कंटिन्यू काम चलता है। आई वॉल में व्हाट यू कैन राइट फॉर आई वॉल इज द डिजास्टर्स जोन। Okay, winds are blowing with velocity more than 120 किलोमीटर पर आवर। वर्लिंग करता है विंड चारों तरफ, यानी ये जो तुम्हें टू डायमेंशन में विंड उठता हुआ दिख रहा है, ये उठेगा जरूर, इट इज राइजिंग, बट बाय इन दिस वे, बाय बाय रोटेटिंग, सॉरी बाय रिवॉल्विंग अराउंड द आई, रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द आई के चारों तरफ ऐसे घूमेगा थ्री डायमेंशनली। ठीक है, क्यों घूमता है? कोरिलेस फोर्स की वजह से, ध्यान रखना, आई के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स इनको घुमा रहा होता है, और कोरिलेस फोर्स ही इनिशियल जो प्रेशर है, यहाँ पे देख सकते हो, जब ये मैंने कहा था सरफेस पर इन ओवर द ओशन इफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर इज generating, so this low pressure attracting the wind from all side, is attracting the wind from all side or the surrounding region or from the high pressure to low pressure। तो ये जो winds का attraction होता है, लेकिन winds are attracting towards low pressure but spirally, you can see spirally घूमते हुए आ रहे हैं, सीधा कोई नहीं आ रहा, देखो घूमते हुए आ रहा है। Why they are spirally coming? Because of Coriolis force। Coriolis force इसको आके अब इस अंदर वाले लो प्रेशर को घुमाता है, ये जो विंड घूम रही है वही अंदर के लो प्रेशर को घुमाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से साइक्लोन घूमता रहता है, बिकॉज ऑफ कोरिलेस फोर्स। 0 to 5 डिग्री इक्वेटर के पास, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर लो प्रेशर तो बनता है, बट 0 to 5 डिग्री में साइक्लोन डेवलप नहीं होता है, ध्यान रखना। Why cyclones are not developing between 0 to 5 degree north and south? Because of what? Because of zero Coriolis force। Coriolis force मतलब रोटेटिंग फोर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड वो फोर्स है, और वो हमेशा रोटेशन ऑफ अर्थ के उल्टा ही लगता है। जीरो कोरिलेस फोर्स की वजह से 0 to 5 डिग्री में साइक्लोन नहीं फॉर्म होते हैं, भले ही लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ 0 to 40 की जगह 5 to 40 कर दो, या 5 to 30 कर दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आई मीन ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज हाउ साइक्लोन इज डेवलपिंग। तो इनिशियली अगर तुम पूछोगे तो ये क्राइटेरिया एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है कि भाई इनिशियली वीक प्रेशर होता है और वीक वॉर्टेक्स होता है। वॉर्टेक्स मीन्स भांवर जो घूमता रहता है, वर्लपूल है ना। ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली लो प्रेशर स्ट्रेंथनिंग, काफी दिन तक यहाँ गर्मी बनी रहती है, तो ये लो प्रेशर स्ट्रांग हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग विंड्स फ्रॉम पेरिफेरी, starts attracting winds from periphery। These winds are coming spirally। spirally means घूमते हुए आ रहे हैं। Why? Because of Coriolis force। बट ये घूमते हुए यहाँ पर नहीं आ सकते 0 to 5 डिग्री में, क्यों? वहाँ Coriolis force जीरो है, तो लो प्रेशर तो बनेगा बट साइक्लोन नहीं बनेगा। साइक्लोन कहाँ बनेगा? इस रीजन में बनने का चांस होता है, बाकी कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो। नेक्स्ट वन इज, दिस इज ऑल अबाउट आई, this is eye wall, and you know what is the condition of eye wall? Disaster zone, winds are blowing with more velocity, that is more than 120 km per hour, and here cumulus and cumulonimbus clouds are precipitating with torrential downpour with thunder and lightning। Okay,
सो बहुत बारिश होती है, क्यूमुलस क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बनता है, टोरेंशियल डाउनपोर मूसलाधार बारिश होती है बिजली चमकने और गरजने के साथ, वेलोसिटी विंड की इतना होती है, इसलिए बहुत डिजास्टर जोन है आई वॉल। आई वॉल के पीछे एक और रीजन है दैट इज नोन एज इनर रिंग। इनर रिंग इज ऑल्सो हैविंग क्लाउड्स, इनर रिंग में भी क्लाउड्स होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते जितने आई वॉल में। सो इनर रिंग इज ऑल्सो हैविंग क्लाउड बिकॉज वो बिल्कुल पास में ही है। तो फ्रॉम दिस प्लेस ऑल्सो कन्वेक्शनल करेंट्स आर राइजिंग, यहाँ से भी उठता है बिल्कुल आई वॉल के पास में इसलिए, बट यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्पेटिवली कम रहती है, बहुत कम नहीं, बहुत कम होगी तो साइक्लोन बनेगी नहीं, थोड़ी सी इससे कम होती है। और यहाँ पर भी रेनफॉल यू कैन सी हियर ऑल्सो। सो रेनफॉल यहाँ भी होता है, आई वॉल में भी होता है। ओके, so this is known as inner ring. This is the name of this zone, inner ring. So inner ring के बारे में क्या लिखोगे? To write about inner ring, inner ring surrounding what? Wall, zone of high precipitation। इसमें क्या है देखो, पहले वाले में टोरेंशियल डाउनपोर यानी मूसलाधार बहुत तेज बारिश, यहाँ पर बस हाई प्रेसिपिटेशन, तेज बारिश होती है। हाई प्रेसिपिटेशन, जोन ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ भी बनते हैं लेकिन कॉम्पेरेटिवली कम मात्रा में। ठीक है, आई वॉल इज ऑल्सो डिजास्टर्स तो है लेकिन पहले वाले से लेस डिजास्टर्स, इनर रिंग। पर ठीक ठाक बारिश यहाँ भी हो जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज आउटर रिंग। इन आउटर रिंग यू आर हैविंग ओनली फ्यू क्लाउड्स, बहुत कम होते हैं क्योंकि अब ये साइक्लोन के सेंट्रल पार्ट से हम लोग दूर जा रहे हैं, आई से दूर जा रहे हैं, तो गर्मी भी क्या होगी, कम होगी। गर्मी कम होगी तो क्लाउड्स कम बनेंगे। ठीक है, गर्मी कम होगी तो हवा गर्म होके ऊपर नहीं उठेगी ना, जब ऊपर नहीं उठेगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश यहाँ भी हो जाती है। तो ये तो अच्छा, आउटर रिंग, दिस इज नोन एज आउटर रिंग। पहले इनको हटा दूं मैं। ओके, सो दे वर सेइंग आउटर रिंग। सो आउटर रिंग का वेदर कैसा होता है? फ्यू क्यूमुलस क्लाउड्स ओनली, दिस इज आउटर रिंग। देखते हैं आउटर रिंग के बारे में। आउटर रिंग, फ्यू cumulus clouds with low rainfall। पहले क्या था? आई वॉल मोस्ट डिजास्टर्स, विंड वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर। इनर रिंग में लिख लो विंड वेलोसिटी विल बी मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जनरली 60 to 80 के बीच में होता है, ये भी ज़्यादा स्पीड है लेकिन आई वॉल से तो तुम्हें दिख रहा है स्पीड कम है। थर्ड इज आउटर रिंग।
outer ring, here the velocity is less than 40 किलोमीटर पर आवर, और भी कम वेलोसिटी होगी. क्यों क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस यहाँ नहीं फॉर्म होगा, सिर्फ क्यूमुलस होगा विद वेरी लो रेनफॉल, दैट इज आउटर रिंग. आउटर रिंग इज नॉट द डेंजरस जोन. इसके बाद एक जोन आता है, देखो क्या होता है वहाँ पे. सी, these are the convectional currents, and convectional currents are cooling, and after cooling they becomes heavier. When they become heavier they start settling in the surrounding region of cyclone. तो साइक्लोन वाला रीजन में नीचे से तो गर्म हवा उठ ही रहा है, यू कैन सी वार्म वार्म एयर इज राइजिंग कंटिन्यूअसली, isn't it? एंड फॉर्मिंग फोर्स ऑफ बॉयंसी. तो बेयॉन्ड फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसलिए ये जो विंड है ये नीचे वहीं पे गिरने की बजाय साइक्लोन के बिल्कुल बाहर गिरता है, जहाँ पे इस तरह का बेयॉन्ड फोर्स नहीं लग रहा है. सो विंड्स फ्रॉम द वेयर, फ्रॉम आई वॉल दे आर subsiding in the peripheral region cyclone where high pressure is maintained. सपोज यहाँ पर भी हाई प्रेशर मेंटेन हो गया, तो विंड विल मूव फ्रॉम वेयर, हाई टू लो. यहाँ सेंट्रल पार्ट में लो है, तो हाई से लो की तरफ ब्लो करते हैं, और जैसे आई वॉल के पास आते हैं फिर से ये गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं. तो ये साइकिल चलता रहता है, हाई टू, ठीक है. और ये साइकिल चलता रहता है, यानी विंड की सप्लाई होती है सेंट्रल पार्ट में लो प्रेशर में. विंड की सप्लाई होगी तो साइक्लोन क्या करेगा, अपने आप को मेंटेन कर पाता है, ठीक है. तो दिस लास्ट जोन इज नोन एज एनुलर जोन, माइंड इट. दिस लास्ट जोन ऑफ द और peripheral zone of the cyclone is known as annular zone. Annular, ठीक है. तो एनुलर जोन में क्या होता है ये भी लिख सकते हो तुम. एनुलर जोन, नो क्लाउड्स, क्लियर स्काई एंड लाइट ब्रीजेस आर ब्लोइंग. हल्की हवाएं, लाइट ब्रीजेस आर ब्लोइंग, बहुत ही हल्की हवाएं वहां पे चलती हैं. सो नो क्लाउड्स, क्लियर स्काई, लाइट ब्रीजेस आर ब्लोइंग. ओके. सो वेदर इज अल्टीमेटली फाइन वेदर. वेदर इज फाइन, सुहावना मौसम होता है इस तरह से. देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट द winds are settling at the surface, oceanic surface. They are creating high pressure, and then high to low winds are blowing, and again they are connecting with the cyclone. इधर low है ना बीच में. High pressure means what? Anticyclonic condition. You can also write in annular zone, anticyclonic condition develops due to subsidence of winds, ठीक है. विंड के सबसिडेंस की वजह से हाई प्रेशर बनता है. यहाँ देखो, winds are subsiding in the inner zone. Why? Because from eye wall, तो इसको डिमार्केट कर देते हैं. This is outer ring, inner ring, and eye wall. Okay, this is your eye wall. So in eye wall, intense convective currents are rising, and in the upper atmosphere, they becomes colder, heavier. That's why they settles downward. They're settling downward in the annular zone, where high pressure creates on the surface, and from this high pressure, again there is supply of warm wind towards low pressure. जब यहाँ आता है तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फिर से ऊपर उठने लगता है. कौन?
कौन ऊपर उठ रहा है? कन्वेक्शनल करंट। तो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है ना, जैसे तुमने हेडली सेल में देखा हुआ। इन द सेम वे cycle is forming, Hadley cell is forming, and in this way cyclone continues. Okay, because in order to maintain the heat of the cyclone, or in order to maintain the rising air in the cyclone, there are two things are required, which are present here. First is this high pressure area is supplying what? Winds to the central area, central place of the central part of the cyclone. और वहां से फिर क्या होता है? They are rising higher. Okay, so they are rising higher, and as they are rising higher, obviously they becomes colder in upper atmosphere, and because of coldness and heaviness, they falls in the annular zone. Okay, so this is the supply of, in this way supply of air is continuous in cyclone. Second is in the high wall zone, as the intensity is very high, intensity of rising winds is very high, cumulus and cumulonimbus clouds are also forming with full intensity and with full density. And after precipitation, these cumulus and cumulonimbus clouds are releasing latent heat of condensation. That heat is again required to raise the wind, higher in the atmosphere, isn't it? हीटिंग होगी तभी तो विंड हल्का होकर ऊपर जाएगा. तो ये हीट कौन प्रोवाइड कराता है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ आई वॉल. Okay, so I hope now you got the idea about the genesis of tropical cyclone. Okay, so this is again I'm telling you, this is IQ Civil Science Academy, and you can see that these are the toppers of this academy. So you must grab your seat. You also want to, I hope you also want to get selected in these exams. So don't try to forget these dates. Again, I am telling you 5th December, 15th December. Okay. For any inquiries regarding admission, you can contact on these numbers. You can get the clarity about the admissions and the enrollment. Okay. All the best for 2023 exams. Okay. Thank you.